Assalamu alaikum. This is once again Bilal sir for you from my math school. Today we are going to learn the different types of angles. When we take a single angle in consideration and when we take two angles in consideration. So without much delay, let's start. Now see, uh, first of all, we will take the angles in consideration one by one. Okay, first one is the acute angle. Acute angle. What does we mean by an acute angle? Acute angle is that angle whose measure lies between 0 to 90. 0 to 90, but it will be less than 90. Okay, it is 0 less than x less than 90, less than 90. The angle, वो एंगल जिसका मेजर 0 से 90 तक होगा बट लेस देन 90. ओके, दैट इज कॉल्ड an acute angle. That is called an acute angle. Second one is acute angle like this. This will form an acute angle. This will form an acute angle. Okay, लेस देन 90. ये 89 भी हो सकता है. It may be equal to 89, but it is not equal to 90. So it will start from what? 0 up to 89. Again, that is a right angle. Right angle. A right angle means equal to 90. An angle which is equal to 90 degree. That is known as a right angle. Okay, so it is formed when two lines are mutually perpendicular to each other, and it is represented by this. This is the right angle. Okay, this line is perpendicular to this and this line is perpendicular to this. This is a right angle. After this, we have another type of angle, that is obtuse angle. Obtuse angle. An angle whose measure is greater than 90. See, it is greater than 90 but less than, for example, I will take 130. 130 will be like this. An angle whose measure is greater than 90. Greater than 90 and less than 180. whose measure lies between, जो 90 और 180 के बीच में हो. ओके, तो चाहे यहाँ तक भी होगा ये वाला एंगल और दिस वन, ये सारे ऑब्टूज एंगल्स हैं. ओके, greater than 90 and less than 180. Then there is another angle, that is a straight angle. Straight angle. Straight angle is, it forms a straight line, that means it is equal to 180. If we have a straight line, okay, then this angle is known as a straight angle. It is equal to 180. This is a straight angle. इसको straight angle कहते हैं जो 180 के बराबर हो. Fifth one is a reflex angle. Reflex, it is greater than 180. Reflex angle is greater than 180 but less than 360. Okay, an angle whose measure is greater than 180 but less than 360 is known as a reflex angle. Reflex angle, आप देखो ये जो this one, it may be 270. This is known as a reflex angle. Reflex angle. How we will find this? It is simply we have to calculate this and then subtract it from 360.
अगर हम ये वाला 360, क्योंकि जो कंप्लीट एंगल होता है जो इसके बाद हम देखेंगे, दिस इज द 270, इट इज अ रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल, और दिस इज नोन एज ए रिफ्लेक्स एंगल। वो एंगल जिसका मेजर 180 और 360 के बीच में लाई करता हो उसको कहते हैं हम व्हाट, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ एंगल इज दिस कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल वो 360, इट इज इक्वल टू 360। कंप्लीट मीन्स अगर यहाँ से ये दिस लाइन रोटेट्स इन दिस डायरेक्शन, ओके, तो इट विल फॉर्म ए कंप्लीट एंगल जस्ट लाइक दिस। जब ये वापस यहाँ पे पहुंचेगी तो इट विल फॉर्म ए कंप्लीट एंगल दैट इज इक्वल टू 360। okay, these were some angles when taken in consideration. See, acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex and complete angle. Okay, now we are going to discuss the types of angles which are taken in consideration but in pairs, which are taken in consideration in pairs. Okay, उनको हम pairs में लेते हैं। See, first one is adjacent angles. Adjacent angles. Adjacent angles किनको कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं जिनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होगी या उनके बीच में एक कॉमन एज होगा, कॉमन साइड होगा। ओके, a pair of angles is said to be or are said to be what, adjacent angles. Two angles are said to be adjacent if they contain a common edge और ए कॉमन वर्टेक्स। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास दिस इज ए स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे ये इस लाइन को यहाँ पे टच करती है या इट इंटरसेक्ट दिस, ओके, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, these are adjacent angles, these are adjacent angles। तो ये और ये because they contain a common vertex, they contain a common vertex। ये और ये adjacent है, ये और ये भी adjacent है, ये सारे क्या है, adjacent है। ये और ये दोनों adjacent है, these are adjacent angles। ठीक, ये दो भी क्या है, these are adjacent angles, adjacent angles। ओके, नाउ इफ दे हैव ए कॉमन एज, अगर ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक, अब यहाँ पे ये कॉमन वर्टेक्स थी इन दो के बीच में, एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में क्या था, एक कॉमन वर्टेक्स थी, तो दैट मीन्स तो ये दो है एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पे कॉमन एज है तो यहाँ पे एक कॉमन एज है, ठीक, ये कॉमन इनके पास एज है, इस एंगल यहाँ पे 1 और 2 ये क्या है, दीज आर एडजेसेंट, दीज आर एडजेसेंट। तो आप ये याद रखेंगे कि दो एंगल्स तब एडजेसेंट होते हैं या तो इनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होगी या तो एक कॉमन एज होगा। ओके, नाउ सेकंड इज वर्टिकल एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट, vertically opposite angles. Vertically opposite angles means they also have a common vertex, but they are opposite to each other. They are opposite to each other. Two angles are said to be vertically opposite if they have a common vertex, but they lie opposite to one another. Okay, just like this. अगर आप यहाँ बात करेंगे, अगर हम इस एंगल को let's name it as angle 3 and we call it as angle 4। यहाँ पे जो angle 1 comma angle 3 these are vertically opposite। see 1 and 3
These are vertically opposite. 4 and 2 are also vertically opposite. Angle 4 or angle 3. These are vertically opposite angles. Okay. And these adjacent angles are also, they form another pair of angles that is called the linear pair. Linear, let's leave it. We will discuss it later. These are adjacent angles, vertically opposite angles. Okay. Then after this we have a concept of a transversal. Transversal is a line. Transversal is a line that cuts two parallel lines. If we take two lines and we take another line like this, another straight line, these two are also straight lines, and this one also, they can be parallel, they can be non-parallel also, and the line which cuts them is known as a transversal. This line is called the transversal. Okay, this is known as a transversal. So these are two parallel. Here I have taken two parallel lines. They may be non-parallel also, but here I took two parallel lines. यहाँ पे हमने दो parallel lines. Parallel lines are those lines which appear that they will never meet, or they will never meet. Rather, they will never meet. Parallel lines like the railway track. Okay. These two lines are parallel, and this one, the line that cuts them or intersects them, is known as a transversal. Okay, so this one is the transversal. This one is the transversal. Now see, this is the transversal. These are two parallel lines. Okay, and we will see another types of these angles, and those are called what? These are called corresponding angles. Okay, see, corresponding angles, if you will see this angle and this angle, these are corresponding angles, and also this angle and this angle, these are corresponding angles. Why? Because they lie on the same side of a transversal. Two angles are said to be corresponding if they lie on the same side of a transversal. This is a transversal, it cuts two lines. So if this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4. Angle 1 and angle 2 are what? These are corresponding angles. Corresponding angles. Two angles are said to be corresponding if they lie on the same side of the transversal. This is a transversal, and these two lie on the same side. So angle 1, angle 2. Angle 1 and angle 2 are what? These are corresponding angles. Likewise, angle 3 and angle 4 are corresponding angles. We can also take this angle and this angle. These are also corresponding angles. This and this are also corresponding angles. Okay. So corresponding angles, they lie on the same side of a transversal. This is a transversal. In this side, you will take this and these angles, but they appear on the same side of a transversal and look like same. जो ये line, जैसा एंगल ये वाली लाइन इस एंगल के साथ बनाता है, इस ट्रांसवर्सल के साथ एंगल फॉर्म करता है, तो उस एंगल और इस वाली जो ये लाइन इस ट्रांसवर्सल के साथ बनाती है, उन्हीं को कहते हैं हम व्हाट? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. दे लुक लाइक सेम. यू कैन सी, ये और ये सेम दिखती है, ये और ये सेम दिखती है. ओके, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंड आफ्टर दैट वी हैव व्हाट? alternate interior angles. Alternate interior angles. See,
अगर हम इस वाली एंगल को वी विल टेक इट एज 5 एंड दिस एज 6. Okay, alternate interior angles. Alternate interior angles, they also, they are the interior, they lie within the parallel lines and also on the opposite sides. They come alternatively, one from this side and another from this side. See, this angle 6 and angle 4, this 6 and this 4, they lie on the opposite sides. They lie on the opposite side of the transversal, and also what they come, they are the interior angles, not the exterior angles. Alternate interior angles, they lie within the two parallel lines. Okay, ये दो जो parallel lines होती हैं इनके बीच में ये lie करते हैं, और they are not, they don't lie on the same side, they lie on the alternative, they lie alternatively, one from this side and another from this. We can also see angle 2 and angle 5. These are what? These are alternate interior angles. Alternate interior angles. Alternate interior angles. Okay, so we have gone through corresponding angles and alternate interior angles. Okay, now depending upon the measure and their sum, measure and their sum, angles have also been divided into different types. You can see the first one here are the complementary angles. Complementary angles. Complementary angles are those angles whose sum is equal to 90. Those are known as the complementary angles. Okay. Then we have another type, that is supplementary. Supplementary angles are those angles whose sum is 180. Supplementary angles are those angles whose sum is 180. Sum is equal to 180. So two angles are said to be supplementary if their sum is 180. Two angles are said to be complementary if their sum is 90. And also we have another type of angles, that is linear pair. Linear pair of angles. Linear pair of angles, they are adjacent, but they are separated like this. These two angles, when two adjacent angles are separated by a common by a straight line, when two adjacent angles, see this angle 1 and angle 2, these are adjacent angles and they are separated by an edge, this one, or they are separated by a straight line, then they form a linear pair. They form a linear pair of angles. Linear pair of angles, they are adjacent angles and their sum is 180. Their sum is 180. Adjacent angles sharing a common vertex. And the sum of these two angles is also 180. Supplementary means supplementary and this linear pair. These are two different things, but sum of those both are what? 180. लीनियर पेयर का भी 180 होता है, सप्लीमेंट्री का भी 1 होता है, लेकिन लीनियर पेयर में कॉमन वर्टेक्स होती है और जो सप्लीमेंट्री उनमें कॉमन एज भी हो सकता है. अगर हम ये बात करेंगे जस्ट लाइक दिस, अगर एक पैरेललोग्राम हम लेंगे यहाँ पे, दिस इज ए पैरेललोग्राम, तो ये और ये अगर इन दोनों का दिस डजंट मेक ए लीनियर पेयर. लीनियर पेयर को हम सप्लीमेंट्री कह सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स डजंट फॉर्म ए लीनियर पेयर. ओके, तो लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बट एवरी सप्लीमेंट्री एंगल, two angles which are supplementary, we can't tell them that they form a linear pair. तो ये और ये, these two angles, these are adjacent angles, these are supplementary. In a parallelogram, these are supplementary. Okay, so
I will repeat what I told you. Adjacent angles, तो इनमें कॉमन वर्टेक्स या कॉमन एज होना चाहिए. वर्टिकली अपोजिट, एक तो कॉमन वर्टेक्स बट lie on opposite sides. Okay, not on the same side, they lie vertically opposite. Okay, corresponding angles, they lie on the same side of the transversal. Transversal क्या होता है? जो टू straight lines या टू parallel lines को काट करता है. ओके तो अगर ये इफ दे दिस लाइन एंड दिस लाइन विल बी नॉन पैरेलल, तब तो ये इक्वल नहीं होंगी. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल इफ द टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल. ये आप याद रखेंगे. एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर. ओके, इनका सम 90 होता है, इनका 180 और इनका भी 180. देन अगर हमारे पास अब कोई पैरेललोग्राम होगा, अगर यहाँ पे हमारे पास लेट्स टेक दिस पैरेललोग्राम, तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन बन सकते हैं? ओके तो इसमें अल्टरनेट एंगल्स देखो, ये एंगल और ये एंगल, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको इफ आई विल इसको मैं क्या करूँगा, अगर हम z बनाएंगे, देखो ये और ये पैरेलल है, ये एंगल एंड दिस एंगल, ठीक, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो यही शेप अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी यही शेप बनती है. तो दिस एंड दिस, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्योंकि ये दो पैरेलल हैं, तो ये और ये एंगल क्या है? दे lie on the opposite side of the transversal, so these are called the alternate interior angles. एंगल 1 और एंगल 2 alternate interior angle है, और एंगल 3 और एंगल 4 these are alternate interior angles. ये अगर फॉर एग्जांपल ये 30 है तो ये भी 30 होगा. ओके अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा. ठीक, तो these are called the alternate interior angles. होप दैट कि आपने ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. इफ स्टिल देयर इज एनी कंफ्यूजन, तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. बट यू हैव टू व्हाट यू हैव टू सब्सक्राइब माय मैथ स्कूल एंड जस्ट यू कैन कमेंट कि आपको कौन सा जो वीडियो है you have a confusion in that. So I will try to understand you that problem, और वो जो टॉपिक में आप के टॉपिक में जो confusion होगा, तो I will try my best कि वो दूर हो जाए. Till the next video, have a good time. Thank you.